Yes. So in this case, we have just a straight line, and the straight line equation is y is equal to mx plus c. This we know, right? Yes. And if we have a graph like this, suppose like this, it goes like this. So again, we have y is equal to mx plus c, and this time m is negative, right? This we already know, correct? From this, if we move forward, we may get so like you may have equations like this: y is equal to x square, x cube, like that. Okay, so like you may have potential which is of the form of x square, harmonic oscillator potential, right? X cube. So how the graph of this will look like, this also you should know. Kaisa dikhega? So this is a parabola, simple, right? So this will look like this parabola, and about x cube will be like this on the positive side, but like this on the negative side, right? Yes, sir. देखो ध्यान से. So this will be y is equal to x square, and this will be y is equal to x cube. And you can also see this will be symmetric about y axis. This is even function. This is even function, symmetric about y axis, and this is odd function because it is y is equal to x cube. This is odd function, so it will be symmetric about, bolo, Axis XY, y 0 in Why first to explain? and third quadrant. You can see the symmetry. If you put a line y is equal to x, it will be symmetric about it, right? जैसा इसके इस तरफ होगा वैसा ही इसके इस तरफ होगा. So you can see the symmetry between this first and third quadrant. Another example of this x square even function is cos of x. You can see the function cos of x. So how the function cos of x will be there, it will go like this, you can see. So it is symmetric about this, like first and second quadrant. Yeah. Yes, sir. And इसके लिए क्या example ले सकते हैं? What example we can take? Sin x. Sin x. Right? We can take sin x. So again, you can see in first and third quadrant, there is a symmetry. If you multiply the third quadrant by negative sign, you will get the same thing as in the first quadrant. So this is the property of odd function, right? So algebraic functions may x square, x cube, x to the power 4 even, all those things will look like same. And then cos function, sine function, these are simple example of even and odd properties you can see from here. Let us move into another type of functions which we use. So if we move further, what we are going to get sometimes is exponential function, e to the power x, right? So exponential function, you know, when you plot at x is equal to 0, it becomes 1, right? And जैसे से x की वैल्यू बढ़ती जाती है, it starts increasing, correct? And Yes, sir. जैसे से x की वैल्यू कम होती जाती है नेगेटिव में, it will go to 0. 0. So you can see this is 0, this is plus infinity, and this is minus infinity. So the nature of the graph will be like this. Okay? Yes?
Yes, sir. And if it is y is equal to e to the power minus x, then इसका mirror. आंसर नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाएगा. so then what will happen? Let us see at x is equal to 0. What will happen? 1. So 1. So it will be like this. Yes. Yes, And sir. when we take sir. negative, it will start shooting up like this, right? So the graph will be like this. Clear to everyone? Yes, sir. So these will be Sir. coming at many occasions. You will start getting such graphs at many occasions. So it should be clear. So sometimes you will get a graph which is like this. Fx is equal to, suppose I take 1 upon 1 plus x square. Okay. And this is known as Lorentzian function. Lorentzian function. This is known as Lorentzian function, right? So if we plot such a function, this is very, very interesting. It appears at many, many places. This function is very, very important. At x is equal to 0, you can see what is the value? 1. 1. At x is equal to 0, what is the value of this function? It is 1. 1. And at x is equal to infinity, what it will become? 0. 0. So that means it 0. will go like this. Here it will become 1, and at x is equal to infinity, it will go towards 0, right? And at x is equal to minus infinity also, it will go to 0. So you can see in the case of resonance, etc., we get such type of function, right? And this is known as Lorentzian function. Okay. So this is the height, and sometimes 1 by root 2 times of this. ये सब define किया जाता है ना जरूरत पड़ने पे. Suppose this is 1 and this is 1 by root 2 times. So this is its width. Okay. So this is known as Lorentzian function. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now, So this is like Gaussian type. not like Gaussian. This is different from Gaussian. Yeah. ये वैसे ही सिमिलर है जैसे मेरा और आपका शकल मिलता है. दो आंख है, दो कान है, ठीक है. जब एक के ऊपर जब साथ साथ प्लॉट करोगे तो पता चलेगा कि दे आर डिफरेंट, राइट. दोनों का रेट अलग होगा डीके करने का, बिकॉज दोनों का स्लोप डिफरेंट होगा, राइट. बट देखने में एक जैसे दिखेंगे. ओके. सो this is Lorentzian function, and then the name you took, the next one, it will be Gaussian. Gaussian function, right? So what will be the Gaussian function? Gaussian function हम कहते हैं या फिर इसको normal भी बोलते हैं, okay? Because they represent some distributions, ना? These functions may represent some distribution. So this is called normal also. Suppose I have a function like this, fx is equal to e to the power minus x square over 2 sigma square. Okay. Suppose the function is like this, and let us plot it. So how the plot will come? If I may multiply it with some constant so that the area under the graph becomes 1.
वो भी करके देख लेंगे, ठीक है ना. So then it will be called normal distribution, and then it will become a probability distribution function, right? So suppose at x is equal to 0, what will be the value? It will be 1. And at x is equal to infinity or minus infinity, it will go like this, right? So plus infinity and minus infinity. This is called Gaussian function. This is very, very important. Quantum mechanics, very, very important. And where probability distribution, जहां जहां पढ़ोगे, stat में भी और भी कई जगह. So this will become very, very important because this represents some kind of probability distribution. This may represent. So suppose I take the multiple here, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा दूसरे चैप्टर में. अभी सिर्फ ग्राफ देख लो, ठीक है. अब एक बात ध्यान से देखो कि अगर मैं सिग्मा की वैल्यू को बढ़ाऊं तो क्या होगा इस ग्राफ में. What will happen if I change the value of sigma? जल्दी Yes. Increase. पूरा पूरा बोला करो भाई, तुम लोग स्पेस बार दबा के बोलते हो, सुनाई डीके होगा सर. क्या हुआ? डीके जल्दी कर रहे हैं. नहीं जल्दी करेगा. धीरे Wrong. करेगा. कौन सर. बोल रहा है? Wrong. Increase करेगा. आप बगैर सोचे बोल रहे हो. अगर मैं सिग्मा की वैल्यू बढ़ाता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो. इट विल बी e टू द पावर माइनस, इस क्वांटिटी को मैं अल्फा लिख ले रहा हूं, अल्फा एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज अल्फा? 1/2 sigma square. So if I am increasing the value of sigma, that means I am decreasing the value of alpha, right? So alpha increase करने से ये तेजी से गिरता, but तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे बना रहा हूं ग्राफ, that it goes faster. So what should I write? This is suppose sigma 1, this is sigma 2. So which one is greater? Sigma Sigma 1 or sigma 2? 1. Sigma 2 greater decay कर रहा है. No, which one is greater? Sigma 1 is greater than sigma 2. This is correct or not? Yes sir. Yes sir. Yes. Tell me. Yes sir. Yes sir. कैसे? सर क्योंकि जो सिग्मा 1 वाला ग्राफ है वो धीरे गिर रहा है और सिग्मा क्योंकि 2 वाला ध्यान से देखो, जब तुम सिग्मा बढ़ाओगे तो अल्फा कम हो जाएगा. अल्फा कम हो जाएगा तो देख लो अल्फा यहाँ कोफिशिएंट में पड़ा हुआ है. सो इफ अल्फा डिक्रीजेस दैट मींस ये अब थोड़ा स्लो तरीके से नीचे जाएगा, राइट? Yes sir. At higher value you will get that type of decrease in the value. So that means ये रिलेशन इनवर्स है. बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है ना? Okay. Then you can also, very interesting, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि I can multiply it with some quantity so that its area becomes 1, right? What is the area right now? Because Sir, we have seen the integrals now. sir, root 2 pi sigma. We can calculate the integral 2 minus infinity to plus infinity e to the power minus x square by 2 sigma square dx. This is under root pi by alpha. And what is alpha? 1/2 sigma square, right? So it will become sigma under root 2 pi. Is this correct? Yes sir. This is the area. So if I divide it or multiply it so that it becomes 1, area should become 1. Divide. divide. So if I divide it like this, 1 over sigma over 2 pi, then now this becomes probability distribution function. Okay?
Now this becomes probability. 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 Why? Because now if I calculate integral minus infinity to plus infinity fx dx, the area will come out to be 1. So now it can be a probability function. Is that okay? Yes, sir. एक second. Wait. Okay. समझ आ रहा है भाई? Yes, sir. अब जरा बताओ प्लॉट कैसा होगा इसका? How the plot will look like? सर No. सेम ही दिखेगा Sigma root पर. No, no. सर, बस 1 की जगह पे जो है 0 पे. Now you see this. I am plotting two graphs. This is sigma 1 and this is sigma 2. Now tell me relation between sigma 1 and sigma 2. So sigma 2 is greater than sigma 1. Equal, sir. No, no, no. Sigma is sitting in the denominator. Please see. So 0 पे value. let us check at 0 first of all. Okay. What will happen at 0? At 0, this term will become 1. So the height of the function will depend on 1 by sigma. So that means smaller will be at greater height. Are you getting it or not? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. So smaller sigma will be at greater height, right? तो जो sigma छोटा है वो उसकी height ज्यादा है. Is that okay? Yes, sir. And ये function काफी काम आएगा. इसमें कोई doubt हो तो पूछ सकते हो भाई. If there is any doubt, please ask. So area of both will be same. Area Or of not? both will be equal to. Okay, sir. Equal to बताओ. 1. 1. अरे भाई 1. जब ये sigma 1 लोगे तो ये भी तो sigma 1 हो जाएगा. और जब ये हाँ. sigma 2 लोगे तो ये भी sigma 2 हो जाएगा, right? So area, इसकी हाइट बढ़ रही है तो इसकी विड्थ कम होती जा रही है ना. दैट्स व्हाई एरिया विल रिमेन कंजर्व. ओके, ठीक है. और अगर इसकी सिग्मा की वैल्यू को मैं बहुत ज्यादा छोटा कर दूं, सिग्मा बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल. सो ये फंक्शन कैसा दिखाई देगा? Asymptotic. Hmm? Asymptotic. If sigma, Delta function. Delta Is- function. if sigma becomes very very small, then its height will become very very large and it will be about a point only. It will become like this. It will be converted to a delta function. This is known as delta function. So suppose this is x and this is fx. So this fx will be delta function x minus 0. क्योंकि इसकी लोकेशन कहाँ पे है? 0. This will become a delta function, right? And still the area will be 1. The area under this curve is still equal to 1. Okay, that means its Yes, sir. height will become very very large and its width will become very very small. Is that okay? Yes, sir. Now let us also take some functions which I am giving you. अब थोड़ा सा practice करो. और ये ट्रेंड आपको बना के रखना है आगे तक भी कि if you get a new function, so immediately try to plot it
अपने मन से करने की कोशिश करो. Suppose I give you a function like this. Fx is equal to x sin x. Just plot it. Fx is equal to x sin x. सर ये एम्पलीफाइंग सिग्नल की तरह होगा, लाइक बढ़ता ही रहेगा, कैसा दिखेगा? साइन की तरह रहेगा लेकिन बढ़ता रहेगा. So at x is equal to 0, it is 0. यस सर. Then here, साइन के नोड्स इसके भी नोड्स होंगे. okay. Yes. And how the left side? Same. नेगेटिव. Sign सर Here? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. यस. sign like na? It should go here. सर ये इवन फंक्शन बन जाएगा ना? It should go here. नो. So No, देखो, sir. No, sir. जब मैं ऐसे बोलूं तो किसी ऐप का यूज मत करना, ये बात ध्यान रखना. देखो, जो अच्छी चीजें हैं उसके आपको पता है ना, निगेटिव इफेक्ट्स पहले आते हैं और पॉजिटिव बाद में आते हैं, क्योंकि हमको एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है और इंट्यूशन के लिए भी. तो ऐप की हेल्प आपको लेना है जब कहीं आप फंस जाएं या फिर कंफर्म करने के लिए. बट सबसे पहले जस्ट ट्राई टू make an intuition. So see, this is Perfect. odd, this is odd. So odd into odd is even. So Yes. it will be symmetric about y-axis. So it will go like this. Like that. Okay. Yes. And ये both एक जैसे होंगे. It will catch up like this. Okay. Is that okay? यस सर. So Yes. इस तरीके के बहुत सारे ग्राफ्स आप ट्राई करके देख सकते हो. Let me give you one more to plot. Suppose the graph is fx is equal to 3x square minus 2x cube. So how we will plot it? What will be the symmetry of this graph? Neither even neither. So it will have no symmetry, like even and odd symmetry will not be there. It will start from x is equal to 0, right? And initially when the value of x will be small, ध्यान से देखना, मान लो x less than 1 है, तो ये term बहुत छोटा होगा, right? यस सर. Because it is x cube. So it will grow like x square initially. Are you getting it or not? यस सर. Yes. Initially it will grow like this x square, but then when x will become greater than 1, slowly and slowly this term will start dominating. This will come into picture and it will start decreasing overall because this is negative and first term is positive. And finally it will take it to the negative because ultimately this has to dominate at large values of x. So this is how it looks like. And for negative values, what will happen? For x So- negative, Always positive. पॉजिटिविटी की तरफ भागेगा. Positive होगा ever increasing function. so at First x x negative it will become positive because this will also become positive, na? So it will start going like this. Are you getting it? मैक्सिमम मिनिमा से होगा. Yes, sir. This also we can calculate. This calculate it quickly. What is this value? X naught? 1. 1. 1? Yes, Yes. sir. Okay. So this value is 1. Okay. So this type of function we can always deal.
Another one, fx is equal to, suppose I take x by 1 plus x square, like this. Yes. तो छोटी वैल्यूज के लिए बढ़ेगा बट देन डिक्रीज करना शुरू कर देगा. So let us see, at x is equal to 0, what will happen? 0. 0. 0. So that means x is equal to 0, it will be 0, right? 1 only, sir. Sorry. At x is equal to 0, it will be 0, sir. 0. And then जैसे से आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, right? So initially what will happen, that this will not play role, It's but not x to the dominant. power 1 will play role, right? But finally it has to dominate because it is x square. So at x is equal to, sir, at x is equal to infinity, finally it should become 0, right? So with increase in x, it will go like this, and then finally it will dominate. It will go to, at x tends to infinity, it will become 0. And this is odd function, so it will be symmetric in 4 quadrant. So it will go like this, right? Yes sir. Clear to everybody? Yes, sir. ये एक बार फिर से बता दीजिए. जब हम x is equal to 0 लेंगे तो ये 0 होगा. ये फिर हम x की वैल्यू बढ़ाना शुरू करेंगे, 0 से आगे चलना शुरू करेंगे, ठीक है? तो शुरू में क्या होगा कि बिकॉज यहाँ x स्क्वायर है, तो तुम सपोज जब 0 से लेके 1 के बीच में चलोगे, तो सपोज तुम 0.5 पे हो, तो 0.5 का स्क्वायर बहुत ही छोटा नंबर है ना, जी सर. तो ये डोमिनेट करेगा. ओके. और ये क्या कह रहा है कि fx को बढ़ना चाहिए, हाँ तो सर. शुरू में बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप 1 को क्रॉस करोगे, तो अब इसका रोल शुरू होगा, ये वैल्यू को नीचे लेके आना शुरू करेगा, और at very very large value of x it will become 0. So that's why like this. ओके सर. And because it is odd function, f of minus x is equal to minus of fx. This is odd function. So what will happen? It is, you can see, symmetric about y is equal to x axis or first and fourth quadrant. So जैसा इस quadrant में दिख रहा है, वैसा ही इसमें, अगर इस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बिल्कुल ऐसा आ जाना चाहिए. ओके? ठीक है? Yes sir. चलो एक और ग्राफ प्लॉट करो. y is equal to a e to the power minus alpha x plus b. So b भी पावर में है. अब ये कोई इस क्लास में ऐसा नहीं है कि आई कैन टीच यू ऑल टाइप ऑफ ग्राफ्स. द पर्पज इज टू इनिशिएट. अब ये आप अपने तरफ से करते रहना, जब भी कोई ग्राफ मिले तो उसको प्रॉपर प्लॉट करके देखते रहना, ठीक है? A plus B से स्टार्ट होगा और B पे सैचुरेट हो जाएगा. Everyone try to plot it. So how this will look like? This is 0. So at x is equal to 0, it will be what?
A plus B. What value we will have? A plus B. So like somewhere here, Yes, sir. and then with X, it will start falling. Yes, sir. Sir. जैसे से X बढ़ेगा, ये टर्म छोटा होता जाएगा ना? Yes, Yes, sir. But at X is equal to infinity, B will remain. Fx will become B. B. So B की एक लाइन बना लो, right? This line is of B. So it will start falling from here and it will touch this at very, very large values. So this will be X and this will be F of X. Right? Yes, sir. नेगेटिव में इंक्रीज होगा ना सर? And in negative value, it will start increasing. So I should extrapolate this like this. Okay? Yes, sir. बहुत ही अच्छा सा कर्व है. कभी सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाए अगर ये, तो और सॉल्यूशन को अगर प्लॉट्स के फॉर्म में दे दिया जाए, तो इट विल बिकम वेरी वेरी नाइस, राइट? Yes, sir. सो मैं कहूंगा कि आप ये ग्राफ की चीजों को कहीं अपने कॉपी में इनिशिएट करो अपनी तरफ से. कल भी मैंने आपको बोला था. और जिस भी ऐसे रैंडम ग्राफ्स मत प्लॉट करना, बिकॉज इन फिजिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स. सो क्वांटम में, मैथमेटिकल में, स्टैटिस्टिकल में, वेयर एवर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, वेयर एवर यू फाइंड अ ग्राफ, a different type of functions, then plot it there. You can make a very small, I mean thin copy also. जो बिल्कुल plain copies आती है ना, तो उसमें एक एक करके and that will become your, ऐसे ही मैथमेटिकल फॉर्मूलेस का भी आपको accumulation कर लेना है. जो भी कोई नया फॉर्मूला अपीयर हो, जो आता है उसको मत लिखो. नोट्स बनाने में हम क्या गलती करते हैं कि जो आता है उसी से भर देते हैं कॉपी. भाई वो तो तुम्हें आता ही है. You don't need that. So those graphs and those new formulas, integrals that you don't know, just write it somewhere. और धीरे धीरे करके then you will not need that copy after some time. But initial stage में that helps you a lot during your studies. जैसे अगर आप इनिशियली अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, तो आपके दिमाग में एक ये कहीं ना कहीं बर्डन होता है कि बहुत सारी चीजें मुझे याद नहीं है, बहुत सारी चीजें फॉर्मूले मुझे क्लिक नहीं कर रहे हैं. तो वो जस्ट कहीं शुरू में लिख लिया करो. फिर धीरे धीरे करके क्या होगा कि वंस यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन, तो वो बिकॉज दे विल, यू विल बी यूजिंग ऑल ऑफ देम, तो वो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा. फिर लास्ट में गिनती के 3-4 ऐसे फॉर्मूले रह जाते हैं कि जिनको लगता है कि आपको लास्ट टाइम में भी देखने की जरूरत है. अदरवाइज यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग. ओके? Yes, sir. सो व्हाट अदर फंक्शंस वी कैन ट्राई? Sir, hyperbolic. सो लाइक, हाँ, एक फंक्शन ट्राई करते हैं, tan हाइपरबोलिक x. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे पोटेंशियल्स जो रिसर्च में यूज होते हैं उनकी प्रोफाइल tan हाइपरबोलिक के फॉर्म में ली जाती है. ठीक है? अच्छा, उससे पहले जरा कुछ और सिंपल फंक्शंस में डिस्कस कर दूं. y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x जैसे, राइट? तो मॉड ऑफ x विल बी लाइक दिस. सो whenever you find mod, that means it is a even function, right? Yes, sir. Yes, sir. So you will plot it like this. First of all, take x positive. So positive means y is equal to x. It will be like this. And then it is even function. So it will be like this. Symmetric about y axis, right? Yes, sir. Everybody. Yes, sir.
जिसको आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको नहीं आता है, वो भी लोग बताते रहेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है। ऐसे ही यू कैन ऑल्सो सी y is equal to e to the power minus mod of x. So you will see at x is equal to 0, and then this is also even function. So for simplicity, just take x positive, so it will become e to the power minus x, and positive means it will go like this, and because it is even function, it will be symmetric about y axis. So this will become y and this will become x. Yes. Yes, sir. Yes, sir. And what will be equation of this graph? Because I have started from straight line, remember? So what will be equation of this? Y is equal to? mx plus c. So this will be Minus having k negative by- slope, negative slope. This will be having positive slope, right? अभी बताया था ना? R by So minus k by K. a X x plus k, plus K. right? yes sir. सर Yes. सर ये e की पावर माइनस x वाला जो आराम से अनम्यूट करके बोलो। आप क्या करते हो आप लोग? सर ये जो e की पावर माइनस मॉड x वाला ग्राफ है, तो इसमें जैसे ये मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन सर जो नेगेटिव e की पावर मतलब जो वैल्यू लेंगे वो तो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि नेगेटिव साइन तो बाहर है ना, मतलब तो सर हम ग्राफ प्लॉट सर थोड़ा अच्छा, समझ। ओके हाँ। ओके, वेट, I understood what you want to know. So it will be, let us see, y is equal to, let me break it down. So when x is greater than 0, then it is very simple. It will become e to the power minus x, right? यस सर, And when x is less than 0, then it will become e to the power x, यस सर, यस सर, right? यस So, सर, यस सर, so when greater than 0, then it is okay. This graph is okay. यस सर, Now when you are x less than 0, then all the values of x will be negative, na? Minus Yes, 1, sir. minus 2, Yes, sir. minus 3. So that's why it will keep falling, right? ओके सर, Yeah. थैंक यू सर। Yeah, this will be used. I will be using it in Fourier transformation, Fourier series, everywhere. ओके Okay, this is okay. Yes sir. Now, जरा ये हाइपरबोलिक डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही मजेदार है। पोटेंशियल वगैरह जब यूज करते हैं ना हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, तो tan hyperbolic, especially plasma physics में बहुत यूज होता है tan hyperbolic x. Suppose the potential is like this. Now, how it looks like? So we will write that fx is equal to e to the power x minus e to the power minus x over e to the power x plus e to the power minus x, right? यही तो होता है. So this will become e to the power 2x minus 1 over e to the power 2x plus 1. Am I right? Yes sir. सबको समझ आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes. Now, how to handle this? इसमें देखो ध्यान से अगर, तो what I can do is I can write it like 1 minus e to the power minus 2x over 1 plus e to the power minus 2x. Can I write it like this? Yes sir. Everybody? Yes, sir. So now if I will plot it at x is equal to 0, 1 minus 1 will become 0. Hello? Yes, sir. यस
at x is equal to 0, it will become e to the power 0, and 1 minus 1 will be 0. And as the value of x will increase, x will go to infinity, these terms will become 0 and answer will be 1. So I will put 1 here as a line. This is line 1. So it will start from here and saturate to this. Yes or no? Yes. And similarly, it will start from here and saturate this side. Sir, it will be less than 1, na? Saturation वाला part. Sorry? ये जो saturation वाला part वो less than 1 है ना? क्योंकि e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1. तो at x tends to infinity, in infinity minus 1 by infinity plus 1. अरे तो क्या यार, infinity minus 1 ऐसे करते हैं क्या? मतलब वो less than 1 है ना? At x y tending, equal to 1 is an asymptote. at x is equal to infinity, what will happen? These terms will become very small. E to the power minus infinity, this will be almost 0, right? Yes, yes. So this will be asymptotic to this line. Y is equal to 1 if you draw a line. So at infinity, it will be touching it. Okay, we say it like that. What do you want to say? Okay, okay, ठीक. And at so इसीलिए ये पोटेंशियल इतना यूज किया जाता है, बिकॉज एक्चुअली हमें इस टाइप के एक पोटेंशियल की जरूरत होती है बहुत जगहों पे, कि मुझे ऐसे पोटेंशियल मिल जाए इस टाइप का. देखना ध्यान से, ऐसा कि जब मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में रहूं तो पहले लीनियरली इंक्रीज करे फिर कांस्टेंट हो जाए. समझ रहे हो? और जब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊं तो ऐसे लीनियरली जाए और फिर कांस्टेंट हो जाए. इस टाइप के पोटेंशियल की बहुत जरूरत पड़ती है. लेट अस नॉट डिस्कस इट राइट नाउ हियर. सो ये तो बड़ा ही अजीब फंक्शन होता है ना, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखनी पड़ती है. देन यू हैव टू राइट दिस कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट. आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर. यस. सो इसको कुछ तुम्हें पता चल रहा है कि ये इसको थोड़ा मिमिक कर रहा है? हाँ सर. तो Yes. ये कितना सिंपल है लिख देना, जस्ट tan hyperbolic x, राइट? यू कैन कंट्रोल इट. यस You सर. can control its height by putting a coefficient here, right? So that's why this is so popular function, tan hyperbolic x. Okay? So Yes. नेगेटिव एक्स एक्सिस में कैसे डील किए सर? करो डील, कुछ खुद भी करो, ट्राई करो. At x minus infinity, चेक करो क्या होगा. यहां पे ही पुट कर देना होगा फिर at x minus infinity. So it will become -1. वरुण, यस सर. वरुण ने पूछा है, किसने पूछा है? No, sir. समझ आया भाई, किसने पूछा है? यस सर. अगर if you want to put it at x tends to minus infinity, then where you will put? You will put it here. You want e to Yes, the sir. power minus infinity, na, so that it becomes 0. Okay. So this term will become 0. This term will become 0. What will be the answer? -1. -1. So limit को बड़ा ध्यान से रखते हैं, ये नहीं कहीं भी रख दो. Okay. थोड़ा सा आपको अरेंज करके रखना होता है, ये आप जानते हो, क्लास 12 से जानते आ रहे हो. तो everybody will make a thin copy. Yes, sir. Yes. मैं सबकी फोटो मंगाऊंगा और जितने अभी कुछ ग्राफ्स आप बना लो, फिर जो भी अपीयर हो जिस क्लास में उसको वहां जाके बनाना है सबको. इज दैट ओके? यस Yes, सर. sir. क्योंकि Yes. ऐसे मौका नहीं मिलता है कि अलग से इतने आराम आराम से चीजों को. देन Sir. नाउ वी हैव टू गो इनटू इन आवर कोर्स. ओके. सो बट आई थॉट कि चलो
लेट अस डिस्कस इट। हाँ बताओ भाई। सर ये कॉट हाइपरबोलिक एक्स का